Then comes to the C programming string function. The string can be defined as one-dimensional array of character terminated by null. The combination of letter or character is called as the string. The character array or the string is used to manipulate the text such as word or sentence. Each character in the array occupied 1 byte of memory. So it contains 1 byte of memory, and the last character must always be 0. The termination of the any string that you can define like what /0. Okay, it is an important in a string since it is the only way to identify where the string is in. When you define a string as character 10, then the character S10 is implicitly initialized with a null in the memory. Okay, suppose your character size is if you pass like your name. Okay, then suppose your name is 10, but you have to pass as 11 character. As because by default it will take one null value. Okay. Oh. That when you are passing a character array, more than one size you have to pass for storing the default value that is null. Okay. Suppose if your character size is 4, but at runtime you have to pass as a 5 space. If you define as 5 space, then your character is stored because by default it is stored in null value. Okay. Clear? जदि आमे सपोज मो नाटा होची सपोज 8टा कैरेक्टर तो मो 8 जगह 9 दो मत हबो तो 9 न देखि जदि मो 8 देली ताले कोन होची ताले लास्ट कैरेक्टर रे ही आसीबोनी ओ देखिबो टोटल शो ही करिवनी ना कारण गोटे बाय डिफॉल्ट नॉल नै जाइतो ओहो बुझिल सर So there are two type of to declare a string in the C language. You have to define by character array or by defining a string literal. Okay, in the two way you can define by defining a character array or by defining a string literal. The difference between character array and string literal is what? There are two main difference between the array and literal. You need to add the null character /0 at the end of the array by ourselves, whereas it is appended internally by the compiler in the case of character array. Suppose character greeting 6. So we are passing 1, 2, 3, 4, 5. And for 6th position, we are using /0. Null. That is called as a null. Okay. And here we are defining a character greeting, then hello we are passing. Okay. किंतु एथिरा तो हमें मेंशन करले ने हमको केतेटा माने केतेटा वैल्यू हमको दरकार रहल तो मेंशन होला देखो एटा होची स्ट्रिंग आरे एटा होची कैरेक्टर आरे रे हमको पर्टिकुलर साइज दाव पड़े बुझियो हेलो सर मो वॉइस आछि हां एबे आसले हेलो सर हां फास्ट जोटा होची सेटा होची स्ट्रिंग आरे फास्ट होची कैरेक्टर आरे तापटा होची स्ट्रिंग आरे अच्छा किंतु स्ट्रिंग आरे रे तो हमें मेंशन करू ना जे केतेटा हमको दरकार बोली वैल्यू स्ट्रिंग रे केमते डिफाइन हम स्ट्रिंग रे हमको दरकार आरे टा होची देखो हमें आरे जतबा डिफाइन करू छ हमें तो एई दीटा वे रे करि परिबा आइदर गोटे साइज दे परिबा और विदाउट साइज रे भी पास कर परिबा विदाउट साइज रे पास कला
जेतरा करबा जेतिकटा मोर कैरेक्टर हेतो से सेतिकटा वैल्यू रहो। ओहो माने आरे रे सेमती कंपलसरी नाही जे हमको केतेटा वैल्यू नचे लिखियार अछि बोली इंडेक्स नंबर गुडा। ना इंडेक्स नंबर टा नेले कोन हबो ना हमें यूजर टर जेतरा इनपुट नबा सेतरा हमें मेंशन करबा आउ एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग अरे हमें जदी इनिशियलाइजेशन कर दबो त आ किछ दरकार नै। अच्छा 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 बुझिल सर आज्ञा सर। हम्म Then in the string, we can define the various kind of operation like string copy, string concat, it will retrieve the string length, string compare, string character, then only string it will display here. So here the program it is display you the length function. See that it is showing you length of the string A equals to 7, length of the string B equals to 7. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so it is taking a one null value here. null value हाँ बुझल सर से जो परसेंटाइल जेडयू जो नेले हमें the काहे length कि नेले सेटा अच्छा लेंथ पाई परसेंटाइल जेडयू एथरे तो सेम आइला किंतु एटा टिके एरर देखौची warning format percentile guy except the type int that is null false होची चलिबो दिटा it will give you the same output here. ଆଉ strlen जोटा हम नेले सेटा होची string length ता देखियो हाँ 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 strlen आज्ञा is सर used for defining the string length. आज्ञा सर The next is string copy method. You have to copy one string into the another string. The character string 1, C programming. Then we copy the string 1 to the string 2. So for copy केमते कॉपी होला ओहो हाँ हाँ str copy method use कराना. से PUTS रो काम Just आगु पड़िबो.
Now, if you see here, we are defining a string 1, 20, size is 20, then C programming. String 2 is 20, we are not passing any value. Then it is copy the element. But copy from string 1 and store into the string 2. String 2. Here, puts method is used to display the data. अच्छा डिस्प्ले करिवा हमें string 2 को सेते put string 2 हला Puts method. अच्छा Okay. Now it is copy the string 1 data into the string 2 and it is display here. When you write put string 2, then it is display C programming. puts जगह हम जदि printf देके लिखथांते printf दे कोन भी लिखा percentage s देतले ही थांदा Okay. हां होच आना अलग अलग हुए ताला अच्छी आमे सेटा कोन लिखुतिले Put C. puts हां puts सेटा खाली एई जगह रे हमें यूज कर परिया ना अलगा भी प्रिंट स्टेटमेंट गुडा रे भी यूज कर string statement रे में यूज कर देखिबा एटा आगे पढिबा string copy method, it return value and what is the match. So when you are copy the element, so it is return you 0 if both the string are identical. Negative if the ASCII value for the first unmatched character is less than second. Okay. If you are matching and the first character is lower than the second, then it is showing you -1. Positive integer if the ASCII value of the first unmatched character is greater than the second. Okay, if first one is greater, then it is showing you positive. If second one is greater, then it is showing you negative. And if both the length are equal, it is showing you 0. Okay. strcmp रो फुल फॉर्म टा कोन थिला String comparison. Comparison. ଏଠି ରହିଲା ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର string 1 ରହିଲା ABCD, string 2 ରେ ରହିଲା ABCD, string 3 ରେ ବି ରହିଲା ABCD. String 1 and 3 ABCD is same, but string 2 ABCD is not same because C is a capital. Capital, हाँ. The result string 1 compare string 2. अच्छा हाँ हाँ. Result अलग थे लेकिन चौड़ी था I guess. So string 1 compared to string 3. That is 0. Then string 1 compared to string 2. Okay. Sir, it is 32 कहीं आइला. String 1 compared to, it is showing you the ASCII value.
ASCII value of C. ASCII ମାନେ ASCII value of A is what? 65. Just slow हो जी. ଆଜ୍ଞା sir। सर ASCII कौन ASCII ଏଇଟା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ନମ୍ବର କୁ ପଠେଇବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର A B C D E F ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇବା ସେ ତାକୁ ASCII ନମ୍ବର ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫର୍ମାଟ ମଡେଲରେ କନଭର୍ଟ କରିବ। ओहो ସେଟା ଦେଖୁନି।
एटा देखो स्ट्रिंग टा हमर कंपेयर हलानी बोले 0 देखला जदी कंपेयर होउची से गोटे हम्म जेकोसी पॉजिटिव नंबर शो करियो हम्म बुझियो तेनो एबीसीडी जोरा रहला से हमको थेबो कोन हम्म टू करी देखुची ताल से सेटा पॉजिटिव ASCII वैल्यू टा शो करछ आई गेस तीनटा का कॉम्बिनेशन करी शो करू हम्म आज्ञा सर होला हम्म so let it over today then we start with Monday दशहरा ओके आजी हला आज आज की बार संडे दशहरा अछि संडे गेस अछि फ्राइडे सैटरडे तो क्लास हमरो हबन कहथिले मंडे दशहरा अछि हम्म we start on 27 सर आपण आपण जेबे फ्री हेबे मोर क्लास कर दियंतु माने मु किछि ये नबा को चाहूनी माने ब्रेक नबा को चाहूनी माने जेते हम क्लास हेले करिया जल्दी जल्दी ले सर जीवो तो आपण नेक्स्ट जेबे फ्री होचंती से दिन क्लास कर दियंतु अच्छा हो ठीक है तले मु जणैबी होला आगे आगे सर आज संध्या बेलू जाभा क्लास जमती हबा कथा समझ हबो जावा क्लास तो जाभा रो टाइमिंग हो किछि चेंज होर अछि ना थ्रू आउट ई सेम संध्या टाइम टाइप रो सेही संध्या टाइम रे रहइबो ए 15-20 मिनिट एपट सेपट होची कि जो ट्रैफिक आसला फस जाउ एबे टिके हाँ दशहरा आगे सर ते तारी आगे सर ठीक अछि ଆପଣ सी କ୍ଲାସ ଟା ନେକ୍ସଟ କେବେ ଆପଣ ଫ୍ରି ହେବେ ମୁଁ ତ ଫ୍ରି ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ପଳଉଛି ମାମୁଁ ଘର ପଳଉଛି ମୋ ଲ୍ୟାପଟପ ନେଇକି ପଳଉଛି ତ ଆପଣ ଯେବେ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରି ହେବେ ମତେ କହିଦେଲେ କ୍ଲାସ କରିଦବ ठीक है ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ हम्म।